Right. So last time we talked about dynamic memory allocation. Uh, Dynamic memory allocation was actually discussed, and today we'll continue with that discussion on dynamic memory allocation using the operator or using the keyword new. And we'll also discuss um, that where this memory is allocated and how this memory can be freed. So that would be the first thing that we'll be discussing in today's class. Then I'll also, hopefully towards the end, I'll also discuss a few examples related to operator overloading. So I'll go over an example of operator overloading and different types of operator overloading. That is something that's related to the lecture before, and we'll have some discussion on that as well. Then we'll also discuss that in case of classes, if you have declared a class instance or an object, and for that you already know that there is a constructor that that initializes the parameters of an object as soon as you declare that object, and the initialization of that object is carried out through constructors. And of course, constructors occupy some memory space. Okay, so whenever you initialize them, then some memory is allocated there. And we'll also look at ways through which one can free that particular memory as well. So if you run, if you have a class and then you generate an instance of that class or an object of that particular class, and then you run your program, the class executes, it generates an instance, and then some memory is utilized, then what's the way of freeing that memory? So we'll also have a discussion on that in our today's discussion, and I'll be showing you some coding examples as well, just so you'll be in a better position to understand this. Okay, so just to recap what we discussed last time, we discussed last time that in case of normal operations of your program, you allocate, whenever you declare an array or you declare an integer or a float variable, there is some memory that gets allocated, and that memory gets allocated on the stack. Whenever you initiate a pointer, again some memory for that particular pointer is initiated on the stack. अगर आप उस pointer को point करते हैं to a memory location, again that memory location is allocated on stack. And stack has a limited memory allocation. So there might be a possibility कि आप कुछ ऐसी allocation करना चाहें जिसके लिए stack के ऊपर space available ना हो, या कुछ ऐसी एलोकेशन करना चाहें जो कि आप स्टैक के ऊपर नहीं करना चाहते. तो फॉर दैट एवरी कंप्यूटिंग मशीन हैज गॉट अ फ्री स्टोर or a free memory space which is called heap, where you can actually allocate that a particular memory. But in order to allocate the memory on the heap, you have to okay, you have to follow a process. Okay, it's not by default. Okay, so whenever you say, let's say int p or int static p, whatever, so the stack automatically is allocating a space for that environment. But अगर आप उसको heap के ऊपर करना चाहते हैं because of some huge space requirement,
या डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आप करना चाहें. फॉर एग्जांपल एट वन इंस्टेंस you require say let's say some bytes of memory, and you know that before running the program. Okay, so in that case, or before the so in that particular case, you can always go for stack, and you can have a fair bit of idea कि अपनी आपके पास इतनी space है या नहीं है. अगर array of size 10 आप declare कर देते हैं, या अगर आप string of a particular size आप करना चाहते हैं, so you can have a fair bit of idea. लेकिन sometimes in your program you have dynamic requirements of memory. That means that as the program runs, sometimes string बड़ा आ जाएगा, किसी दफा string छोटा आ जाएगा. तो उस सूरत में the memory requirement actually keeps on changing. So आप जो block assignment कर रहे हैं of memory, that changes on the runtime. ठीक है, तो उस केस के अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आप करना चाहेंगे, बिकॉज आप ब्लॉक एलोकेशन एक पर्टिकुलर साइज की स्टैक के ऊपर तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब वो रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो ये भी पॉसिबल है कि एक एलोकेशन आप कर लें, दूसरी एलोकेशन जब आप स्टैक पे करना चाहें तो स्टैक में गो फुल, और उस वजह से योर प्रोग्राम में stop running. So in that case, in order to avoid that, dynamic memory allocation आपको करनी पड़ेगी रन टाइम के ऊपर, और उसके लिए आप हीप को यूज करते हैं, यानी फ्री स्टोर आप यूज करते हैं ऑफ मेमोरी, जिसको हम एक स्पेशल ऑपरेटर के थ्रू करते हैं. दैट स्पेशल ऑपरेटर that allocates memory on heap dynamically is an operator which is called new operator. NEW, new operator. So new operator is used, and here is the keyword. So you have the new operator or the new keyword followed by कि आप क्या memory allocate करना चाहते हैं. It could be an integer, it could be float, it could be an array, it could be something else. For example, user defined data type भी हो सकती है, class हो सकती है, struct हो सकता है. ठीक है. And then because it's on the heap, therefore in this particular case, this memory, it can be accessed through a pointer. So that's like the most efficient way of accessing this particular memory allocation, क्योंकि dynamic memory allocation है, कभी आपको कोई एक memory space allocate होगी, फिर जब आप इसको दोबारा reinitialize करते हैं तो आपको कोई और memory space allocate होगी. So you have to keep track of every time, जब भी आप उसको initialize या reinitialize करें या दोबारा से declare करें, तो हर दफ़ा एक नई मेमोरी एलोकेशन आपके पास आएगी. सो इन ऑर्डर टू कीप ट्रैक कि अब कौन सी एट दिस पॉइंट इन टाइम कौन सा ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेटेड है, यू हैव टू हैव अ पॉइंटर for this purpose. Okay, so dynamic allocation on heap is primarily that memory, and the contents of that memory are accessed through a pointer. So this is the standard form of basically allocating a memory on heap dynamically using the new operator of a particular data type, whatever data type it could be, using a pointer. Okay. Right. अच्छा, ठीक है. So let's just continue with this discussion. We have discussed this last time, लेकिन let me just recap this. This is how you actually do it. अगर आपने एक integer array of size 5 जो है वो आपने allocate करनी है on heap, so you basically have this keyword new followed by the type of array and the size of that array, and you assign a pointer to that, and of course उससे पहले आपने एक pointer को जो है वो declare भी करना है. Okay, reshare the screen. Okay, so you want me to reshare the screen. Okay, so I'll just do that. Let me just
do it again. अच्छा जी, राइट, आई होप अब ये स्लाइड्स चेंज हो रही हैं, राइट? ओके, okay, जी काइम, I guess this should be right. Okay, so this is the standard way of doing it. आपने एक pointer declare किया और फिर उस pointer को आपने initialize कर दिया. And remember, ये pointer जो आपने जिस memory को ये allocate, जिस memory को ये point कर रहा है, that is on heap. So this part is on heap, and this part here is on the stack. So जो memory जिसके ऊपर pointer itself located है, that is on the stack. Okay, so this is an alternate way of doing it. We actually discussed this earlier. And where is this pointer pointing to? तो जो block allocation आपने की है उसके starting point के ऊपर उसकी जो first block memory cell है उसकी तरफ ये pointer जो है वो point करेगा. And you can actually go from say the first memory location to the next and so on and so forth by incrementing the address. Okay, so normal declaration or dynamic declaration, we have already discussed this. अच्छा, what happens अगर आपके ऊपर heap के ऊपर भी जगह जो है वो कम पड़ जाए और आप memory allocate ना कर सकें? We'll see an example of that as well. तो उस सूरत में that is what the bad allocation exception would actually be thrown, और उसकी वजह से क्या होगा? You will not be able to run the program will exit. तो अगर आपके पास memory allocation ऐसी आ जाती है जो कि आप नहीं कर सकते हीप के ऊपर, किसी वजह से हीप के ऊपर इतनी स्पेस नहीं है, तो उस सूरत में what will happen? So in this particular case, what would happen is कि bad allocation will be thrown, and for that case we discussed last time कि उसके दो तरीके हैं to actually know कि क्या ये bad allocation हुई है, because the program would exit without giving any sort of say indication. So here is a small piece of code which uses this try catch loop. Try catch loop is actually here. We'll discuss this in detail later on. लेकिन ये try catch loop है, इसके अंदर you basically allocate within this loop, ठीक है? And so and if the allocation is successful, fine. If the allocation is not successful, तो फिर catch का जो block है, this is the block for the catch. Catch block के अंदर जो है वो you have written a message, so that message would be displayed. So if that allocation is not done, so how would this code run? It would allocate this memory array integer array on the heap, and this allocation will continue until you are successfully allocating the space, and as soon as the allocation is not possible, the catch block will get activated, and allocation failure will basically be intimated to that. तो यहाँ पे आप इस जगह के ऊपर you can also write a cout message saying कि allocation successful. So जितनी दफ़ा allocation successful होगी उतनी दफ़ा आपके पास एलोकेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, अदरवाइज जैसी वो अनसक्सेसफुल होगी एलोकेशन फेल्ड का मैसेज आएगा, which is given here. So that successful the message for that successful allocation is not given here, but you can always write it down. Try catch जो उसका जो सिंटैक्स है, उसका जो यूजेज है, इसकी डिटेल्स हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में करेंगे, बट for the time being I'll just show you okay, how this particular allocation would work on a simple example. So let me just share another screen with you जिसमें मैं आपको कुछ
मेमोरी एलोकेशन करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या सक्सेसफुल होती है या नहीं होती. So let me just write a small piece of code. So okay. I hope you can see this compiler here. So I'll for a while I'll basically show you this particular part. I'll explain कि ये delete कब आप use करते हैं और कैसे use करते हैं later. लेकिन this is a small piece of code. यहाँ पे आपने main program के अंदर what you have done is कि you start by saying कि जी अच्छा you are trying to allocate. अच्छा this is not try catch. अच्छा sorry I'll come to this later on. This is not try catch. This is another way of getting the message which I haven't really explained. तो so maybe try catch को मैं बाद में आपको दिखाता हूँ. For the time being हम ये करते हैं. I'll come to this in a while. Meanwhile मैं ये करता हूँ. Okay, I'll just explain it here, or I've already explained it earlier. लेकिन I think we can leave it for a while and discuss it later on जब हम complete exception handling करेंगे. तो try catch operation जो है, how is it done? The simple idea of this try catch operation is कि try catch block के अंदर, so you have T for try and then you have the catch, C for catch, और इसके अंदर you have this block, this is block 1, let's call it block 1. तो block 1 के अंदर you write down the allocation, जो भी आपने allocation करनी है, और फिर C का एक अपना सब ब्लॉक है. So C का एक अपना सब ब्लॉक होगा and this is the sub block for C and let's call it B2. इस सब ब्लॉक के अंदर primarily if an exception is caught, so this C will catch that exception, और यहाँ पे you can actually write down whatever you want to do if an exception is caught. So you can print a message or anything of that sort. ठीक है. So B1 के अंदर जो है वो आप allocation कर रहे हैं और B2 के अंदर आप मैसेज कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए, या कुछ और कर रहे हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि प्रोग्राम जो है the program may not get executed. Yeah, you can put some remedial actions here. So try catch इंशाल्लाह हम later on जब exception handling करेंगे we'll discuss this. So probably ये एक चीज़ है जो कि हम discuss करेंगे. उसका एग्जांपल भी मैंने आपको शो किया, which is no throw. So no throw is relatively easier and no throw में क्या हो रहा है? So I'll just go over this. I'll go over the syntax. The syntax is not that difficult. You basically use the new as it is, लेकिन between the data type and the new keyword you write this keyword which is no throw within brackets. ठीक है. और no throw का मतलब यह है कि अगर allocation आपकी दुरुस्त नहीं होती then the pointer will point to a null pointer. That means कि zero को वो point करेगा. Right. So here you can see कि जब अगर whenever this pointer points to becomes a null pointer, that means कि वो allocation नहीं हुई. Right. And this is with the no throw example. So null point करेगा to actually nothing. So this would only be possible जब आपकी allocation true नहीं होती, then only the pointer will point to the null point or nulls null. So this is the example जो कि मैं आपको वो IDE में दिखा रहा था. तो here you actually start by writing an allocation. So this is the allocation. उससे पहले आप एक मैसेज कर रहे हैं और because using namespace std मैंने यूज़ नहीं किया तो इसलिए मैं std को इस तरीके से scope resolution operator के थ्रू यूज़ कर. ठीक है. तो और यहाँ पे ये हम allocation कर रहे हैं of this much size. ठीक है. So if this allocation is done,
तो फिर आपके पास मैसेज आ जाएगा सेइंग कि जी आपकी एलोकेशन जो है वो सक्सेसफुल है, इट्स आउटसाइड द नो थ्रो ब्लॉक। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल नहीं है तो P will point to 0, that means कि ये null pointer होगा, and if it is a null pointer तो फिर that means कि the allocation has not been done correctly, right? So this is what this program is. So if I just run this program, okay. Yeah, so I hope you can see this. This is the same program. So if I execute this, so you can see that attempting to allocate is succeeded. But now if I just add some numbers here and make it a big number, let's see कि क्या ये allocation successful होती है, and now it says कि the allocation has failed. Okay, so that means कि अब P जो है that is basically pointing to 0 because this allocation wasn't successful at all, and the other one was successful. तो इसको अगर मैं execute करता हूँ तो this is a successful allocation. ठीक है, तो this is how you can actually know कि क्या ये exception कोई आई है या नहीं आई है. Okay, so I hope this simple example actually clarifies this. अच्छा, delete का मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या है. अच्छा, so I'll come to this point कि delete आप क्यों use करते हैं. तो primarily so this is how new keyword is actually used. ठीक है जी. तो so again this is another piece of code. You can try it out. ये slides के ऊपर है, so you can try to see कैसे हो सकता है. This is again an example of no through. अच्छा, these are the different operators or functions that are used here. अच्छा, अभी तक हमने क्या किया है, we have used this notation and we have used this notation. इससे पहले obviously आपको जो है वो इसका टाइप भी डिफाइन करनी है. तो delete is कि आपने new से तो allocate कर दिया, लेकिन अब आपने क्योंकि हीप के ऊपर एलोकेट किया तो दैट एलोकेशन विल ऑटोमेटिकली नॉट गो अवे. कि आपने जो भी एलोकेशन मेमोरी की है, आपने इनिशियली पॉइंटर जो है वो एक अरे इंटीजर अरे को पॉइंट कर रहा है ऑफ साइज लेट्स से 10, और फिर आप एक फ्लोट की तरफ पॉइंट करना चाह रहे हैं ऑन द हीप यूजिंग द सेम पॉइंटर. तो उस सूरत में आपको पहले मेमोरी को डी एलोकेट करना पड़ेगा, और डी एलोकेट करने के बाद आप उसको किसी और तरफ पॉइंट कर सकते हैं. सो दैट डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी इज डन थ्रू द डिलीट प्रोसेस के थ्रू वो मेमोरी एलोकेशन होती. अच्छा, जस्ट टू रीकैप एंड विल कम टू दैट एग्जांपल के डिलीट किस तरीके से आप उसको यूज करते हैं. was simple example that will explain you कि कैसे करते हैं. But just to recap what we have done so far, memory layout आपका ये I mean of any program is that you have the code section of your memory जहाँ पे आपके पास instructions पड़ी हुई हैं. Then you have the global declaration part जहाँ पे आप declare करते हैं. Then you have the free storage part which is called the heap, और इसको access as I told you you can do it through new or stack के ऊपर primarily local variable or function calls or return or actual execution of the program is actually done. ठीक है, so because stack has a limited memory तो इसलिए आपको free space को use करना पड़ता है. अच्छा, this is how the new operation actually is carried out, and this would also explain you कि how is the memory allocation actually done. So you have a new followed by the type, let's say new integer आप कोई declare करते हैं. So this would generate an integer at a particular memory location, let's say 500, और ये memory उसने allocate कर दी. लेकिन the contents of that memory are not there. The reason for that is
कि you haven't really initialized this. आपने इस int को initialize नहीं किया. So what you do is that you initialize it with the help of you first generate a pointer, ठीक है, create a pointer और declare a pointer p, और ये जो pointer p है that will be on stack, ठीक है. So this would be on stack. So you have a stack here और यहाँ पे आपने एक pointer p which has its और उसके अंदर address पड़ा हुआ है of that memory location जिसकी तरफ आपने उसको initialize किया है. New int if you remember is placed as at memory location of 500. So इस p के अंदर जो contents होंगे that would be 500, ठीक है. p के contents की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. और heap के ऊपर अभी आपने int के अंदर you haven't put any value, so no value will be there. So you just have these question marks here are basically telling you कि इसका contents अभी आपने initialize नहीं किए. And how would you initialize the contents of that? By writing a statement like this. You have static p which 5, and that means कि अब उसके contents जो है ना they have been occupied by 5, ठीक है. So this has been done, ठीक है जी. अब so you can like again point it to some other location. यहाँ पे एक आपने integer किया है with a value of 10 and you are used a new keyword again here. So यहाँ पे आपने एक new keyword use करके एक नई allocation आप कर दी of p, ठीक है. So what would happen here? यहाँ पे क्या होगा? Where will p point to now? जी, anyone? मेमोरी लोकेशन 10 नहीं होगी सारा. दिस इज नॉट मेमोरी लोकेशन. आपने int and within brackets you have put a value of 10, so the value will be 10, ठीक है. लेकिन इस केस में this 10 will be located at memory location 500. You can like unmute yourself also, or yeah, you can write in the comment. अच्छा, because I have used new again here, ठीक है. तो इस सूरत में it would point to जी. अच्छा, इस केस में it would point to a different memory location on the heap, ठीक है. So एक नई memory location के ऊपर आएगा और उसमें contents जो है ना वो 10 content होगा. So this is what will happen. Okay, a new memory location जिसमें value 10 होगी and p will now point to 10, ठीक है. p will now point to 10. अब p को आपने point किया because you have used the same pointer and now it's pointing to 10. But what would happen to 500 in this case? Location 500. जी मास नहीं हो जाएगा जी, inaccessible नहीं हो जाएगी ये लोकेशन मेमोरी की. ये 500 वाली लोकेशन जो है this will become inaccessible now क्योंकि आपने p को पॉइंट कर दिया to another allocation, to a memory location 800 or whatever other value, और उसका content 10 होगा. लेकिन अब now there is no pointer that is pointing to 500, तो आप उसको access कैसे करेंगे unless you point to that. So this 500 memory location with the contents 5 will primarily be a garbage that is being collected on your heap, ठीक है. And this garbage may increase and this garbage may reduce the memory location, memory allocations आपकी. तो अगर आप pointer को किसी और location पे point करने से पहले अगर आप memory free नहीं करते, then a lot of garbage will get collected in this particular case, ठीक है. तो इसका best तरीका क्या है? So this is primarily the garbage part. So what is the best way of doing it? The best way of doing it is कि जब आप इसको before you say point your pointer to any other location, आप पहले previous allocation को delete करें, ठीक है.
So delete p. Delete p, remember, as a syntax actually tells you, delete p will not delete the pointer. Okay, now this is an important point. Delete p will not delete the pointer. So pointer p जो है स्टैक के ऊपर आपने जनरेट किया हुआ है, ये जिस मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ये p जो है वो डिलीट नहीं होगी, बल्कि ये जिसको रेफर कर रहे हैं आप, ये पॉइंटर जिस मेमोरी लोकेशन को ये रेफर कर रहे हैं, उसको वो उसके कंटेंट्स को जो है वो प्राइमरीली एलिमिनेट कर देगा और इस तरह से आप मेमोरी को फ्री कर सकेंगे। तो जो मेमोरी एलोकेशन आपने पहले की हुई है स्टैटिक p5 वैल्यू के साथ, उसको ये फ्री करेगा। ठीक है, ओके। सो अब आपने डिलीट कर दिया। अब जब आपने डिलीट कर दिया तो पॉइंटर p तो डिलीट नहीं हुआ, ठीक है, पॉइंटर p तो अपनी जगह पे है, लेकिन नाउ इट्स नॉट पॉइंटिंग टू एनीथिंग, क्योंकि आपने जिन कंटेंट्स को ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा था वो कंटेंट्स आपने डिलीट किए। ठीक है, मेमोरी लोकेशन तो ऑब्वियसली अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन अब बिकॉज इट्स नॉट पॉइंटिंग टू एनी पर्टिकुलर वैल्यू, तो एज अ रिजल्ट दिस विल बिकम अ डैंगलिंग पॉइंटर। ठीक है, सो दिस वुड बी अ सिचुएशन ऑफ अ डैंगलिंग पॉइंटर। तो आपको इमीडिएटली ये करना है कि अनलेस यू हैव फिनिश्ड योर प्रोग्राम एंड यू आर आउट ऑफ द ब्लॉक एंड यू डोंट रियली रिक्वायर एनीथिंग एल्स, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन। तो उसके लिए आपको यू हैव टू री-इनिशियलाइज और पुट a new initialization here. तो जब आप ये नई initialization of p करेंगे, then it will point to that new location, और आपके पास जो memory contents हैं they'll also be changing in this particular case. ठीक है, so remember delete is to free the pointer, free the memory. It's basically used to actually eliminate the garbage and to prevent unoptimized use of memory in this particular case. और अगर आप delete को use करते हैं और उसके बाद अगर आप if you are still running your program and you are in your program और उसको reinitialization in your program, you don't do that reinitialization in your program, in that case it becomes a dangling pointer. ठीक है, तो इस सिचुएशन से आपने अपने आप को बचाना है। तो therefore if you are in the middle of your program and you are done some allocation, और अगर आपने उस allocation को delete कर दिया है using this delete operation, तो you have to reinitialize it if you are within the same program. If you are still interested in running the program outside after the delete allocation. ठीक है जी, so okay, so no, delete p will not generate any error अगर आप उसको करते हैं। the only thing will be कि वहाँ पे आपके प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा पॉइंटर रहेगा as long as it gets executed the program which won't be pointing to any particular content. ठीक है, लेकिन as soon as you leave the program, जैसे आपने फर्ज करें प्रोग्राम खत्म हो गया, you are out of the program, your program terminates, in that particular case everything would obviously be reset. ठीक है, so that is something which you have to be really very careful. अच्छा, इसमें there are two things that you have to keep in mind. One is कि अगर आपके पास let's say कि एक integer variable है of let's say यहाँ पे आपके पास एक integer variable था और आपने कोई value उसको assign कर दी, ठीक है, और फिर आपने उसको delete कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास कोई और वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल फ्लोट है, तो उसको भी आप इसी तरीके से डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास वो है फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इरे है, तो डिलीट कीवर्ड के बाद यू हैव टू हैव दीज ब्रैकेट्स, ठीक है, एंड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द पॉइंटर व्हिच यू हैव गिवन। ठीक है, तो ये जो ब्रेसेस हैं, ब्रैकेट्स हैं, these brackets would indicate कि आप you are going to delete an array. ठीक है, तो वो you will basically be deleting an array in this particular case. ठीक है, तो delete के बाद if there are open bracket and close bracket followed by the name of the pointer, so this would say कि
the contents of P that would be pointing to an array will get deleted. And I'll just show you in a while कि ये with the help of a small code कि ये कैसे काम करता है. Before we do that, Suleiman, you have a question? अच्छा नहीं, सुलेमान ने हाथ नीचे कर लिया. मुस्तफ़ा? सर मैंने पूछा था कि अगर आप डिलीट करने के बाद उसको रीइनिशियलाइज ना करें कोड के बीच में तो वो कोई एरर्स कॉज करेगा? नहीं, एरर कोई कॉज नहीं करेगा. सिर्फ वो यही होगा कि यू विल बी हैविंग, अगर आप डिलीट नहीं कर रहे तो यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ डैंगलिंग पॉइंटर्स एंड दैट वुड क्रिएट, आई मीन ऑप्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव से दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी. ठीक है, क्योंकि स्टैक के ऊपर तो स्पेस अभी भी आपने एलोकेट की. जी मुस्तफ़ा. सर वो मुझे पूछना था कि हम डिलीट की कमांड के बाद जब उसको हम वैल्यू देखेंगे तो उसमें नल पॉइंटर देगा या एरर आ जाएगा? नहीं, उसके कंटेंट्स के अंदर जो है ना, उस मेमोरी के कंटेंट्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इट वुड बी अ जंक वैल्यू. ठीक है, और इंटीजर के केस में ऑब्वियसली वो 0 आपके पास आता है. लेकिन लेट्स से फ्लोट का केस अगर होगा या रे अगर आप कर रहे हैं तो उसके कंटेंट्स जो है ना, दे बेसिकली विल बिकम जंक, क्योंकि वो उन कंटेंट्स को वो पॉइंट नहीं कर रहा. ठीक है, लेकिन एरर नहीं आएगा. एरर विल नॉट बी देयर. ठीक है, सो ओके, सो लेट मी जस्ट शो यू a small program जिसमें we have used this. Okay. Sorry. Okay. I'll just show you. Just be with me. हाँ जी. Okay. And now I'll share the screen. I've got this with me. Right, Ji. So here is a small piece of code that we have developed here. Isme, you look at the main part of the program. यहाँ पे what we are doing is कि we are initializing a pointer. We are declaring a pointer and initializing it to null, and that's just the start value. और उसके बाद then we have this allocation bit here. तो यहाँ पे we are putting a value 29 to storing 29 in our pointer, and we are printing this value 29 in this particular block. ठीक है, और नो थ्रो को यूज कर रहे हैं. और अगर ये एलोकेशन किसी वजह से नहीं होती, in that case what will happen is कि आपके पास allocation failure का मैसेज आ जाएगा. अच्छा, this here is the second part of the code जिसमें हमने एक float value को new के साथ allocate किया. ठीक है, r value r has been allocated, और उस value को अगर हम print कर रहे हैं and so we are allocating this. So this command is primarily for float, and then if you look at this part here, request block memory of size n. So यहाँ पे हम एक array initialize कर रहे हैं of size n, of size 5, and the value of n is 5 in this particular case. So integer n declare किया, और यहाँ पे एक q pointer हमने declare किया which is pointing to an array of size n. ठीक है, no throw block है,
और नो थ्रो ब्लॉक एज आई टोल्ड यू कि अगर वो नल को पॉइंट करेगा तो इन दैट केस एलोकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। तो पहली कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर वो एलोकेशन सक्सेसफुल नहीं है तो फिर एलोकेशन फेल्ड का मैसेज आएगा, और अगर वो एलोकेशन सक्सेसफुल है तो व्हाट दिस प्रोग्राम इज डूइंग, दिस प्रोग्राम इज बेसिकली असाइनिंग सम वैल्यूज टू दैट अरे, और फिर उन वैल्यूज को जो है वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है जी। सो इफ यू रन दिस, अच्छा, एंड वंस यू हैव डन दीज एलोकेशन तो उसके बाद हम उनको डिलीट कर, ठीक है। सो डिलीट p इज द फर्स्ट पॉइंटर जो कि इंटीजर को पॉइंट कर रहा था, डिलीट r इज द सेकंड पॉइंटर जो कि फ्लोट को पॉइंट कर रहा था, एंड डिलीट ब्रैकेट्स q इज द थर्ड पॉइंटर जो कि अरे को डिलीट को पॉइंट कर रहा था। ठीक है जी। So if you run this program you will get say, so let's just run this program and you will get these values which you have seen here. If you just look at this value जो कि मैंने अभी highlight की है, every time you will run it you will get a different value, ठीक है। So it's very very close to zero, so it's almost zero, e to the power minus 38, ठीक है। और अरे के अंदर अगर आप उनके ब्लॉक एलोकेशन में देखें तो यहाँ पे भी एलोकेशंस जो है ना वो बिकॉज ये ब्लॉक एलोकेशंस हैं, सो यू विल हैव अ ब्लॉक एलोकेशन ऑफ साइज 5 एंड एवरी टाइम व्हेन यू विल एग्जीक्यूट दैट, डिलीट के बाद यू विल गेट अ डिफरेंट वैल्यू हियर, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि डिलीट ब्रैकेट्स क्यू जो है वो उसके आप उसके कंटेंट्स को जो है वो पॉइंट प्राइमरीली पॉइंटर क्यू जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, प्राइमरीली उसकी स्टार्ट ऑफ द अरे को पॉइंट कर रहा है। और अगर आप स्टार्ट ऑफ द अरे को ही लूज कर देते हैं, ठीक है, लेट्स से कि अगर आप स्टार्ट ऑफ द अरे को लूज कर देते हैं तो दैट मींस कि यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट अरे, ठीक है। तो द पॉइंट हियर इज कि यहाँ पे आपके पास जो है वो ये 3 डिफरेंट वेज आपके पास हैं, लाइक 3 डिफरेंट एलोकेशंस आपने की और उनको फिर आपने डिलीट किया। तो अनलेस यू डू दिस आपकी मेमोरी फ्री नहीं होगी, ठीक है। एंड नाउ यू कैन लाइक वेरी इजीली रिलेट इट कि अगर आप इस मेमोरी को फ्री नहीं करते तो सून आफ्टर रनिंग फ्यू प्रोग्राम्स यू विल फाइंड आउट कि आपकी जो एलोकेशंस हैं वो अब नहीं हो रही बिकॉज यू हैवंट रियली ऑप्टिमाइज्ड दोज एलोकेशंस प्रॉपर्ली। अच्छा जी, सो I'll share this piece of code and maybe some other examples जो कोडिंग वीडियो में अपलोड करूँगा उसके अंदर, और आप वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं और चला सकते हैं। ओके, सो right जी, so I hope you have followed what we have discussed so far. If there are any questions before we move on, just ask. सर हम ये जो पॉइंटर जब बनाते हैं, जी पॉइंटर क्यू जब बनाया हमने जिसका व्हिच इज अ पॉइंटर टू अरे, जी उसको हम सिर्फ पॉइंटर की इनिशियल वैल्यू को चेक कर रहे हैं जी, इनिशियल लेकिन मेमोरी जब एलोकेट होगी तो मेमोरी तो वो सारे उसके ब्लॉक पॉइंटर की एलोकेशन, सारी वैल्यूज का ही होगी। हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए तो, उसमें जी बताएं। सो हम सिर्फ इनिशियल चेक करेंगे, अगर कहीं आगे एरर आया हो किसी आगे जाके आगे एरर आया हो, आगे एरर नहीं, देखें अब ये आपने फॉर एग्जांपल आपने अरे को एक्सेस करना है ना, तो अरे को एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको अरे का स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ही लूज हो गया आपका, ठीक है, तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दैट अरे, ठीक है। वो जो हमने गार्बेज वाली बात की थी तो वो है, तो आपको आप उसके स्टार्टिंग पॉइंट को आप जब आप डिलीट कर रहे हैं तो आप डिलीट प्रोग्राम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं कि आप उसके हर कंटेंट को आप उसको एक्सेस करें और उनके कंटेंट्स को जो है वो आप डिलीट कर दें, ठीक है। दैट मीन्स कि उसकी मेमोरी को आप फ्री कर दें, ठीक है। आप तमाम को कर सकते हैं, पहले को कर लें, दूसरे को कर लें, आप किसी भी पहले अरे की वैल्यू को आप एक्सेस करके उसको डिलीट कर दें या कंसेक्यूटिवली बाकी सबको थ्रू एन इंक्रीमेंट
आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स अगर मैं अगर डिलीट के टाइम पे मैं यानी 5 इंडेक्स वाली अरे है हाँ जी, और मैं डिलीट करता हूँ उसका सेकंड इंडेक्स, हाँ तो उसको वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस अरे का साइज छोटा कर देगा। ये देखें, नहीं अरे का साइज तो इनिशियली तो उतना ही रहेगा ना, आपकी जो ब्लॉक एलोकेशन है वो तो उतनी रहेगी। तो अच्छा, सिर्फ प्राइमरीली वो इस बीच में केस से में देखिए, वैल्यू इस डिलीट केस हो में जाएगी। सब में मैं जंक ऐड कर रहा हूँ, तो दिस इज व्हाट आई रिटन हियर, ठीक है। आपने फर्स्ट कंटेंट को उठाया और उसके बाद आपने फिर उसको जब आप उसको प्रिंट कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली डूइंग, ठीक है। इंडेक्स 0 पे, इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 3 पे। तो नॉर्मली जब आप कर रहे होते हैं तो वो क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को इनिशियलाइज कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वुड हैपन इज के आपकी अगर पहला ही लूज कर दिया आपने पॉइंट, तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द कंटेंट्स ऑफ द अदर्स। तो जो कंटेंट्स उसमें पड़े हुए हैं ऑलरेडी, वो कंटेंट्स तो डिस्प्ले होंगे ही होंगे, ठीक है। तो वो कंटेंट्स तो चेंज नहीं हो रहे उसके। सर एक चीज़ मुझे नहीं समझ आई, जब हम फर्स्ट टाइम डिक्लेयर करते हैं टॉप पे, हाँ, अरे हमने डिक्लेयर की, वहाँ पर हमने चेक किया इफ नॉट इक्वल टू पी, जी जी, कहाँ पर है फ्लो, ये वाला, इफ नॉट इक्वल टू क्यू, इफ हाँ नॉट जी, इक्वल टू क्यू नीचे। हाँ हाँ, हाँ सो हाँ, हमने सिर्फ ये सिर्फ फर्स्ट उसकी जी जी जी, लोकेशन को चेक कर ऑब्वियसली, रहा है ना। क्योंकि ये पी जो है ये किसको तो पॉइंट कर रहा होगा, ये उसके नहीं नहीं, इनिशियल पी नहीं, पॉइंट। पी नहीं, अच्छा, क्यू नीचे जो क्यू, हाँ जी, वो भी उसके इनिशियल पॉइंट पे कर रहा हूँ। इनिशियल पॉइंट पे, लेकिन हाँ, वो उसमें 5 वैल्यूज हैं। जब कंप्यूटर उसको मेमोरी एलोकेट करेगा हीप में, तो वो तो हम्म, सारे 5 डिफरेंट पॉइंट्स का ये करेगा ना। हाँ। हाँ, तो लेकिन हम सिर्फ अगर वही आपकी चेक कर रहे मेमोरी एलोकेशन, फर्ज करें मेमोरी एलोकेशन सक्सेसफुल नहीं हुई, हैं। तो वो पूरी की पूरा ब्लॉक एलोकेट नहीं होगा। और पूरा ब्लॉक अच्छा, उस वक्त तक एलोकेट नहीं, यानी उसका तरीका क्या है कि अगर आपका पहले एलिमेंट ऑफ द अरे को पॉइंट कर रहा है, अगर उसमें नल आ जाता है, तो दैट मीन्स कि पूरी एलोकेशन नहीं हुई। ठीक है, वो कंप्यूटर उसको नल कर देता है अगर हाँ, पूरे लास्ट में पूरी जाके भी एलोकेशन एरर नहीं आए। होगी, ठीक वो है। पूरी को नलीफाई कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि वो एन अगर आपने 5 दिया है तो वो उसका साइज खुद ही कम करके 3 को एलोकेट कर, ऐसा नहीं। ठीक तो है। वो पूरी ब्लॉक नहीं, एलोकेशन ठीक है, उसके अंदर होगी। ठीक है। राइट। अच्छा, डिलीट ब्रैकेट जहाँ जेब would mean followed by the pointer would mean कि you are actually eliminating or deleting the contents of that pointer, ठीक है। contents of that pointer at any stage would primarily be the initial point, ठीक है। तो अगर मैं तो उस केस में क्या होगा कि बाकी कंटेंट्स शायद आपके पास उसी तरह से रहेंगे, लेकिन यू लूज दैट द इनिशियल कंटेंट। और अगर आपने सबको करना है तो देन यू हैव टू लाइक डू इट इंटेलिजेंट, तमाम कंटेंट्स को अगर आपने डिलीट कर, ठीक है। तो पॉइंटर का कंटेंट जो है वो क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अरे, बस दैट्स इट। तो उसको वो एलिमिनेट कर देगा। ट्राई चेंजिंग दिस कोड, ठीक है। इस कोड के अंदर ट्राई रिमूविंग दिस पार्ट, जिसके अंदर आप सिर्फ स्टैटिक क्यू ही करें, तो फिर देखें क्या होता है इस पार्ट के अंदर। एंड आई लीव इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू कि अगर आप इसमें स्टैटिक क्यू करते हैं, ठीक है, और आप अगर उसको इंक्रीमेंट नहीं करते, देखते नहीं है कि वो क्या हो, तो देन सी के डिस्प्ले क्या होगा, ठीक है। सो यू विल जस्ट सी के क्या डिस्प्ले होता है। ट्राई टू implement this. अच्छा, so this is actually something जो कि is important from the perspective of optimizing your program. आपको मेमोरी लीक्स और इस तरह की जो एलोकेशंस हैं उनसे आप जो है वो बच सकते हैं. Again, this slide is actually showing you an example of an array जो कि आप कर रहे हैं, और इसमें simple allocation है using new यहाँ पे, और फिर आप उसको delete भी कर रहे हैं. So यहाँ पे आप उसकी allocation कर रहे हैं, this is of type float, और यहाँ पे आप उस ptr को delete कर रहे हैं, ठीक है. So you are freeing that memory. अच्छा, so what we have done so far, आपने इंटीजर को
आपने न्यू के साथ आपने फ्लोट किसी भी डेटा टाइप को कर सकते हैं और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को भी कर सकते हैं. नाउ यू ऑलरेडी नो के क्लास एंड स्ट्रक्ट्स आर आल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, राइट. क्लास और स्ट्रक्ट्स भी तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. तो क्या मैं उनको भी एलोकेट कर सकता हूँ? एक ऑब्जेक्ट जो मैंने जनरेट किया है, उस ऑब्जेक्ट को क्या मैं अभी तक मैं स्टैक के ऊपर ही कर रहा हूँ, क्या मैं उसको हीप के ऊपर कर सकता हूँ इनिशियलाइज, या उसको उसकी मेमोरी स्टैक के ऊपर मैं रख सकता हूँ या नहीं रख सकता? द आंसर इज यस, यू कैन एक्चुअली डू इट. एंड हियर इज एन एग्जांपल जिसमें मैंने क्लास स्टूडेंट डिफाइन की है. ठीक है जी, class student define किया. So this is the class student. If you look at this class, so this is the class student. What is this class student doing? इसके अंदर एक integer variable है age और उसके बाद एक constructor है, and the student constructor is being initialized, is being written here, और उसके बाद एक function है get age. ठीक है जी. So this is a public function जो कि ये क्लास कर रही है. सो दिस इज द क्लास दैट हैव जनरेटेड. और उसके बाद व्हाट वी आर डूइंग इज के डायनामिक डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम कर रहे हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास. सो द सिंटैक्स इज एग्जैक्टली द सेम. यहाँ पे हम जो इफ यू रिमेंबर हम पॉइंटर टाइप बताते हैं. तो स्टूडेंट स्टैटिक इज द पॉइंटर टाइप. ठीक है, student is the pointer type. And what is student? Student is primarily a class. ठीक है, and ptr is the pointer that is pointing to this to any will be pointing to any instance of this class. और ये आपने जनरेट कैसे किया है इंस्टेंस? वो आपने जनरेट किया है थ्रू दिस कीवर्ड न्यू. दैट मीन्स कि ये हीप के ऊपर एलोकेशन होगी. और what is the allocation that you have done on the heap? This is again like student. So any object that you will be generating because of a type student, data type student, that would be generated on the heap. और इसी तरह से आप उसको delete कर सकते हैं using this delete ptr thing. ठीक है, और उस पॉइंटर से आप किसी फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन, यहाँ पे हमने एक गेट एज फंक्शन को जो है यूजिंग दिस ptr वी हैव एक्चुअली डन इट. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कीवर्ड न्यू हियर, अब ये जो एलोकेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट होगी, जो भी आपने उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो हीप के ऊपर जनरेट होगा. ठीक है जी. एक्सक्यूज मी अच्छा, जी बताएं साहब. सर, अगर हम 2D एरे बना रहे हैं तो फिर हम उसमें कैसे एलोकेशन करेंगे? 2D अरे बना रहे हैं? नहीं, वैसे सर जैसे आप अच्छा, 2D अरे के अंदर देखें, 2D सिंगल 1D अरे के अंदर आपने तो एक पॉइंटर किया ना. जब आप 2D अरे करेंगे दैट मीन्स कि आपको रोज का भी ख्याल करना है और कॉलम का भी ख्याल करना है. ठीक है, आपने हॉरिजॉन्टली भी मूव करना है और वर्टिकली भी मूव करना है. तो उसके लिए आप एक पॉइंटर नहीं, 2 पॉइंटर्स यूज करेंगे. ठीक है, सो यू विल एक्चुअली बी यूजिंग 2 पॉइंटर्स रादर देन अ सिंगल पॉइंटर. ठीक है, तो उस तरह से आप उसको ट्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो 2D अरेज जो हैं उसके लिए इसी तरह से 3D अरेज जब आएंगी तो उसके लिए ऑब्वियसली जैसे जैसे वो डायमेंशन बढ़ती जाएंगी, हर डायमेंशन को ब्राउज करने के लिए यू विल एक्चुअली हैव टू हैव सेपरेट अरेंजमेंट फॉर दैट. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे इफ यू जस्ट लुक एट दिस कंस्ट्रक्टर जो कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है, दिस कंस्ट्रक्टर हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली. ठीक है, इसमें स्टूडेंट colon age 12 and then the parentheses are primarily empty. So this is, you are accessing a private member of a class and through this function which is called the constructor, which is a student constructor. और आप उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं. जैसे आप पहले कंस्ट्रक्टर बनाते हैं आप वैसे भी बना सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. इफ यू रन दिस प्रोग्राम यू विल बेसिकली बी गेटिंग अ वैल्यू. क्या आउटपुट क्या आएगी इस प्रोग्राम की जी?
Anyone? If you run this program, and just look at this program. Okay. Yes, 12. So the output of this program will be 12. Maz, आपका question था? सर इसमें जो हमने पीटीआर डिक्लेयर किया है ये तो स्टैक के ऊपर बना है, तो हमारा हीप के ऊपर हमने क्या चीज क्रिएट की है? हीप के ऊपर हीप के ऊपर हमने आपने कुछ भी नहीं किया। बेसिकली जो आपने क्लास इज अ डेटा टाइप, जैसे आपने इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेशन की थी, न्यू इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेशन आपने इंटीजर डेटा टाइप की हीप के ऊपर। इसी तरह से स्टूडेंट इज आल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। तो स्टूडेंट डेटा टाइप के लिए जो मेमोरी एलोकेशन जितनी भी होगी वो आप सारी की सारी जो है वो हीप के ऊपर, ठीक है। पीटीआर की जो अपनी एलोकेशन है वो तो स्टैक के ऊपर होगी, यानी उसका अपना एक मेमोरी एड्रेस पड़ा होगा और पीटीआर का अपना, वो तो स्टैक के ऊपर होगा। लेकिन क्लास स्टूडेंट के जितने ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं वो आप डायनामिकली हीप के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हमने कोई इंस्टेंस उसका जैसे ही आपने उसको डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया, द कंस्ट्रक्टर वुड प्राइमरीली बी जनरेटिंग। तो आप प्राइमरीली इस केस के अंदर एक्सप्लिसिट आप उसका इंस्टेंस नहीं जनरेट करते, आप उसका एक एक्सप्लिसिट इंस्टेंस भी जनरेट कर सकते हैं, एक सेपरेट इंस्टेंस भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि जो आपने कंस्ट्रक्टर आपने जो कॉल किया है फंक्शन, उसके लिए ऑब्वियसली एक इनिशियलाइजेशन आपको चाहिए, और वो सारी की सारी इनिशियलाइजेशन जो है वो आपकी स्टैक सॉरी हीप के ऊपर होगी, ठीक है। तो so this is what it is. I'll just see if I can show you an example quickly, ताकि इस केस में भी हम कुछ एलोकेशंस कर सकें, कुछ देख सकें। Right. Let me just see if something could be done. हाँ, बिल्कुल ठीक है। So this is the same program. I'll just show you this. Just wait. अच्छा, ठीक है। Right, जी. So I'll just show you this program. Okay, so I hope you can see this. This is the same program जो मैंने अभी आपको दिखाया है। यहाँ पे हम एज की वैल्यू को लेट्स से वैल्यू ऑफ एज इक्वल टू 20, यहाँ पे मैंने क्लास डिक्लेयर की हुई है। दिस क्लास इज प्राइमरीली क्लास स्टूडेंट। मेन के अंदर आई हैव जनरेटेड अ पॉइंटर of type student, and new is के वो heap के ऊपर करेगा, and this is basically the function that it's actually pointing to। और फिर ये पॉइंटर की इनिशियलाइजेशन उस कंस्ट्रक्टर की तरफ है, और फिर this pointer is actually pointing to this function get age, and it gets the value of age and prints the value of age। और in the get age function उसका print हो रहा है, और फिर वो delete ptr, I mean you are actually deleting the pointer। Let's just execute this। Okay, so you get a value of 20 here, and after getting this value of 20 you delete the pointer and it actually goes away। Acha, this is like use of delete, one way of deleting the memory that has been used up in generating or in creating and in processing an object of a class, ठीक है। क्लास के लिए इफ यू लुक एट दिस कोड, यहाँ पे आपके पास एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है।
और ऑब्वियसली वो जो कंस्ट्रक्टर है व्हेन इट वुड इनिशियलाइज दैट वैल्यू, और फिर आपने फंक्शन कॉल भी किया, सो ऑब्वियसली इट्स यूजिंग सम मेमोरी, ठीक है, कोई मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे भी हो रही होगी, ठीक है, व्हेन इट्स इनिशियलाइजिंग एंड व्हेन यू आर रनिंग दैट डेटा टाइप, यूजर डेटा टाइप here. So what is constructor doing? Constructor is basically allocating some or initializing, और initialization का मतलब क्या है कि you are allocating is you have allocated some memory and then you have actually assigned some values or some content to that particular memory location. ठीक है, तो क्लास डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, मैंने क्लास ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया स्टूडेंट का, लेट से मैंने स्टूडेंट एस एक डेटा टाइप मैंने एक ऑब्जेक्ट मैंने डिफाइन कर दिया उसका, और उस ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्वियसली जब मैंने उसका एक इंस्टेंस डिक्लेयर की तो उसके साथ उसका कंस्ट्रक्टर भी रन करेगा, उसके साथ उसके जितने भी कंस्ट्रक्टर्स हैं, लेट से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो रन करेगा, अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल किया वो रन करेगा, और अगर मैंने पॉइंटर एक जनरेट कर लिया टू दैट इंस्टेंस तो दैट पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टू दैट पर्टिकुलर क्लास, और क्लास का जो इंस्टेंस है या जो ऑब्जेक्ट है दैट वुड आल्सो बी अ ब्लॉक एलोकेशन, एक एलोकेशन उसके अंदर भी हुई जिसके अंदर आपने एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, फिर आपने कुछ फंक्शंस आपने उसके अंदर लिखे हुए हैं, फिर आपने कंस्ट्रक्टर उसके अंदर लिखे हुए हैं, ऑब्वियसली एवरीथिंग दैट you have made or that you have added to that data type that requires some memory, ठीक है, और वो मेमोरी एलोकेशन होगी। नॉर्मली ये मेमोरी एलोकेशन किधर हो रही होती है, ये मेमोरी एलोकेशन जो है वो आपके पास लेट्स से स्टैक्स के ऊपर हो रही होगी, लेकिन जैसे ही आप न्यू यूज करेंगे तो जो भी आप उस क्लास का इंस्टेंस आप बना रहे हैं उसकी मेमोरी एलोकेशन हीप के ऊपर होगी। अच्छा, जब आप हीप के ऊपर एलोकेट करेंगे, और अच्छा क्लास स्ट्रक्ट्स के लिए तो ये डेफिनेटली स्टैक्स के ऊपर आती है, क्लास के लिए जो है जब आपने डी एलोकेट करना है मेमोरी को, तो मेमोरी डी एलोकेशन के लिए तो मेमोरी कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, आई मीन मेमोरी एलोकेट करने के लिए आप कंस्ट्रक्टर्स यूज कर रहे हैं और डिक्लेरेशंस यूज कर रहे हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स को इनिशियलाइज ऑब्वियसली आपने पहले कर दी, लेकिन क्लासेस के अंदर एक स्पेशल अरेंजमेंट है और वो ये है कि आपको डी एलोकेट करने के लिए आपको जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं, and this deallocation के लिए, remember, for deallocating the memory that is associated with an object of a class, and that deallocation can be done through a special type of sort of a function which is called a destructor, ठीक है, तो एक तो आ गया आपके पास कंस्ट्रक्टर, इसी तरह से एक और फंक्शन आपके पास आ सकता है जिसको आप कहते हैं डिस्ट्रक्टर, जो डिस्ट्रॉय करता है, तो दैट मीन्स कि जितनी आपने मेमोरी एलोकेशन उस इंस्टेंस के लिए, इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास के लिए की है, ठीक है, उस मेमोरी एलोकेशन को वो डिस्ट्रक्टर जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। अच्छा, वो कब डिस्ट्रॉय करेगा? वो डिस्ट्रॉय उस वक्त करेगा कि लेट्स से कि आपने एक क्लास डिफाइन की और उस क्लास के अंदर आपने क्लास डिफाइन की, फिर उसका क्या आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, और ऑब्वियसली उस ऑब्जेक्ट के जो पैरामीटर्स हैं, जैसे उसके अंदर आपने जो वेरिएबल्स किए हैं या जो फंक्शंस किए हैं, उनका एक स्कोप, वो किसी स्कोप में काम कर रहे हैं, जैसे कुछ प्राइवेट है, कुछ पब्लिक है, कुछ प्रोटेक्टेड होंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे दे हैव देयर ओन स्कोप। फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्राइवेट मेंबर उसके अंदर है, जैसे इस केस में इंट एज जो है इट्स अ प्राइवेट मेंबर, तो इसका एक लिमिटेड स्कोप है। इसी तरह से जो कंस्ट्रक्टर है उसका एक पब्लिक स्कोप है, इसी तरह से जो गेट एज वाला फंक्शन है उसका भी एक पब्लिक स्कोप है। तो जो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरी है दैट वुड टेक प्लेस जैसे ही आप अपने उस गिवन स्कोप से बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्लास पब्लिक है तो जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा, just before the termination of the program, the destructor function will be called,
और वो डिस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करेगा, इट विल डू जस्ट द ऑपोजिट जो कि कंस्ट्रक्टर कर रहा था। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा था, कंस्ट्रक्टर मेमोरी एलोकेट कर रहा था, उसके कंटेंट्स को जो है वो आप एलोकेट, कंटेंट एलोकेशन आप कर रहे थे, और डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, कंटेंट डिस्ट्रॉय कर देगा, आई मीन रिलीज कर देगा वो मेमोरी जो उन कंटेंट से जो कि कंस्ट्रक्टर ने बिल्ड किया। तो इट वुड जस्ट बी डूइंग द ऑपोजिट थिंग, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर जैसे इस केस में एज की वैल्यू को आपने 20 असाइन कर दिया, जब मैं डिस्ट्रक्टर कॉल करूंगा तो वो इस कंटेंट को रिमूव कर देगा और उसको जो पॉइंट कर रही हैं चीजें उनको भी वो एलिमिनेट कर देगा, प्रोवाइडेड कि आप कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन के अंदर वो चीजें जो है वो आप उस तरीके से डाल सके। तो डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन के अंदर आप डिलीट का कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, आई विल जस्ट शो यू बिफोर वी गो ऑन टू द डिटेल्स, और उसकी डिटेल्स हम ऑब्वियसली इन आवर नेक्स्ट क्लास करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम टुडे, लेकिन आई विल जस्ट शो यू अ स्मॉल पीस ऑफ कोड जहाँ पे कंस्ट्रक्टर आपके कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों यूज हो रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आई डिस्कस दिस इन सम डिटेल नेक्स्ट टाइम। तो ये एक क्लास हमने डिफाइन की, क्लास इज कॉल्ड टेस्टिंग। इसमें एक पब्लिक टेस्टिंग कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन कर दिया। ये कंस्ट्रक्टर सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है, एक सिर्फ कॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी जब आपने एक इंस्टेंस डिक्लेयर किया तो क्या कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या नहीं होता। उसकी निशानी ये है कि अगर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा तो ये सी आउट जो है ये डिस्प्ले होगा, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे दिस इज द डिस्ट्रक्टर। The difference between constructor and destructor is this tilde sign. तो आपने tilde testing, the rest is the same. उसी तरह से इसका destructor का block है। The only difference between constructor and destructor syntax is कि you simply put a tilde before the name, or name of the destructor is exactly the same as the name of the class, ठीक है जी। सो जस्ट टू नो वेदर दिस डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड और नॉट, इसके कंटेंट्स हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, बट हियर इट विल, इफ दिस डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड तो फिर इसके अंदर ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, दैट मैसेज विल बी डिस्प्लेड, ठीक है। तो होता क्या, होता ये है कि जब मैं टेस्टिंग का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने OBG बनाया, ठीक है, जैसे ही मैं डिस्ट्रक्टर जैसे ही मैं ये अपना ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करूँगा, व्हाट विल हैपन, ठीक है, इमीडिएटली कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, ठीक है। और अगर कंस्ट्रक्टर कॉल आ रही है दैट मीन्स कुछ इनिशियलाइजेशन होगी, कोई भी चीज़ इनिशियलाइज आप कर रहे हो, राइट। अच्छा, उसके बाद आई एम एक्सप्लिसिटली कॉलिंग this function which is display, this function display function is there, और ये display function basically represent कर रहा है कि वो अब मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और अब उसके साथ मेरे प्रोग्राम के अंदर आई एम रनिंग सम प्रोग्राम, और वो कोई लाइन ऑफ कोड जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रही है। अच्छा, जैसे ही वो टर्मिनेट होगा ये प्रोग्राम, जस्ट बिफोर द टर्मिनेशन, यानी रिटर्न 0 पे जब वो पहुंचेगा, जस्ट बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ दिस प्रोग्राम, द डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, ठीक है। और डिस्ट्रक्टर के ब्लॉक के अंदर आपने जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड दिस कॉल विल बी ऑटोमेटिक, यू डोंट हैव टू कॉल इट एक्सप्लिसिटली। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है, एंड जस्ट बिफोर इट एक्चुअली टर्मिनेट्स, ठीक है, द प्रोग्राम, द डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, सो दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड, ठीक है। So let me just so if you run this program, ठीक है, so I'll just run this program, so you will see कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया है कंस्ट्रक्टर कॉल, फिर मेरा प्रोग्राम रन कर रहा है, जो भी मैंने अपने प्रोग्राम में करना है दैट विल बी डन, एंड जस्ट बिफोर द प्रोग्राम टर्मिनेट्स डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। तो इट्स एन ऑटोमेटिक कॉल, यहाँ पे मैंने कोई एक्सप्लिसिट कॉल टू दिस फंक्शन नहीं दी, ठीक है।
And what is the purpose of this destructor is, the purpose of this destructor is कि आप यहाँ पे destructor के अंदर ऐसी commands आप लिख सकते हैं जो कि आपकी dynamic memory allocations जो हैं उनको free कर सके. So you don't have to explicitly call it. जैसे for example delete, मैंने पहले delete PTR मैंने पहले लिखा हुआ था मेन प्रोग्राम के अंदर, अब वो delete PTR जो है वो आप ये tilde testing के अंदर लिख सकते हैं. So just before the program finishes, tilde testing will be automatically called and it will free the dynamic memory allocations जो आपने की, right? So I can write down in this block जो कि destructor block है, destructor block के अंदर I can write down all the commands जो delete के साथ हैं. I can write down those commands and I can actually delete the allocations जो कि मैंने new के साथ की हैं. ठीक है जी. So destructor is something that also comes with classes. It's just like default constructor. आपको explicit call करने की ज़रूरत नहीं है. It will automatically be called, and the purpose of this block is primarily to free your memory. और memory free करने के लिए whatever commands are required, you put them in this block. ठीक है. अच्छा, इसकी जो specific examples हैं, we'll do it inshallah next time. Today we don't have time to actually go through this, और उसमें I'll go over some specific examples. So just before I leave, I'll just primarily repeat this destructor thing again. So destructor is just like a default constructor but just doing the opposite thing. Constructor के अंदर आप memory content allocation कर रहे हैं. Destructor के अंदर आप उसको destroy कर सकते हैं, especially वो memory allocation जो कि आपने dynamically की है. The other would automatically be gone. लेकिन अगर आप dangling pointers से बचना चाहते हैं, अगर आप garbage से बचना चाहते हैं in case of classes, तो उस केस के अंदर जितनी भी मेमोरी एलोकेशंस आपने डायनामिकली की हैं उनको आप डिस्ट्रक्टर कोड के अंदर, डिस्ट्रक्टर, लेट्स कॉल इट अ फंक्शन, डिस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर आप उसको थ्रू यूजिंग सम कीवर्ड्स लाइक डिलीट यू कैन एलिमिनेट देम. राइट जी. अच्छा, फाइक का क्वेश्चन ये है कि when would it run automatically? How does the code know when it gets rid of it? अच्छा, as I told you, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका होगा, just before the exit, return 0 पे पहुंचने से immediate पहली कमांड जो होगी, इससे immediate command before the return 0 command will be the destructor call. ठीक है. अच्छा, और remember ये उस वक्त क्यों होगा? ये उस वक्त इसलिए होगा क्योंकि this destructor is in the public domain, right? अगर public domain में है तो therefore when you will compile the program, when you will run the program, तो public domain ends at this point, return 0 जो main program के अंदर आता है. तो just before this command destructor will be run. अच्छा, so in general terms डिस्ट्रक्टर्स कब रन करेंगे? डिस्ट्रक्टर्स उस वक्त रन करेंगे जब वो अपना स्कोप से बाहर निकलना, जस्ट बिफोर दे एग्जिट देयर स्कोप. ठीक है. यहाँ पे क्योंकि डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर्स पब्लिक डोमेन में मैंने डिफाइन किए हैं, तो जैसे ही पब्लिक डोमेन खत्म होने लगेगी डिस्ट्रक्टर रन करे, राइट? और वो रन कैसे करेगा? वो रन ऐसे करेगा कि जस्ट बिफोर दिस रिटर्न 0 कमांड डिस्ट्रक्टर रन करेगा. अच्छा, कंस्ट्रक्टर कब रन करता है? टेस्टिंग ओबीजी जब आपने लिखा, व्हेन दिस लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड कंस्ट्रक्टर विल बी रन. ठीक है. और डिस्ट्रक्टर कब रन होगा? जस्ट बिफोर दिस रिटर्न 0 लाइन. जी.
अच्छा, if we want to, अच्छा 5 का क्वेश्चन ये है, just quickly before you leave, if we want to run the destructors while the code is running to get rid of the instance, हाँ ठीक है, तो उस केस में आप इस डिस्ट्रक्टर को I mean इसका आप स्कोप लिमिट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको पब्लिक डोमेन में ना रखें, ठीक है, आप किसी फंक्शन के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, उसी के अंदर आप उसको इनिशियल